Welcome everyone. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର pedagogy revision part 2 ରେ welcome to exploring goals ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ exploring goals YouTube channel କୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ subscribe କରିକି bell icon hit କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି so that you will get all the live recorded classes and all important information motivation and notification like share ବି କରିଦିଅ starting ରୁ ଆଜି ର session ଭୟାନକ ରହିବ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ and exploring goals application to be joined kari paribo for all details complete preparation coverage of syllabus ebooks pdf practice mock test ସବୁ ଜିନିଷ available ଅଛି and for more details এই number ରେ ତମମାନେ contact କରି ପାରିବ ଏବଂ CDP ର ବା education and child development and pedagogy ର ଯଦି book ତମମାନେ order କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର original price 499 ସେଥିରେ discount ହେଇକି shipping charge ସହିତ 349 ରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ for details you can whatsapp me and application रे join kale तमମାନଙ୍କୁ live class मिलिबो live class जदि miss करूछो recorded class mock test and study materials available so courses कोन कोन अछि application रे B.Ed entrance 2026 ପାଇଁ prepare करि परिबो all TET and teaching exams ପାଇଁ prepare करि परिबो Odisha education service MA education net M.Ed teacher educator रो combo course रे तमे ultimate OES course को पाई परिबो OES Odisha education service ପାଇଁ जदि prepare करबा को चाहछो best sources best materials based classes are available in exploring goals application and ताको छाड़ी के foundation for all other competitive examination এই course रे तम पाइबो आजिर सेशन and yes जेमति तमाने जानि तो सेवक सेविका मेन पाई एबे भी तमाने जॉइन करि परिबो टिल एग्जामिनेशन ए कोर्स sure success batch available अछि 149 rupees रे only exploring goals application रे जाई कि तमाने आगु परचेज करि के फुल प्रिपरेशन करि परिबो तो आमे EVS pedagogy रे 10टा क्वेश्चन करिथिले we will go from 11 most important या परे पुणी आमे अलगा टाइप रो क्वेश्चंस मध्ये रखा जाईछि करिवा which of the following indicates skills process in learning of EVS skill process in learning of EVS yes good evening everyone welcome चलो आसी जाओ सब कौन हबो skills process in learning of EVS रे कोटा बेसी इंपोर्टेंट हाँ नाम सतरे हाँ एबी description नुहे classification is the right answer क्लासिफिकेशन EVS रो सबटु बड़ जिंस क्लासिफाई करिबा अरे पिला को कोठी क्लासरूम रे क्लासिफाई करछ ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग रो कथा क्लासिफिकेशन एठी कहउनी एठी EVS वाला क्लासिफिकेशन कथा कहउची ठीक अछि authentic and meaningful learning of EVS can be given through authentic and meaningful learning केमति हे परिबो EVS रे narratives real dialogues process of experimentation assessment of answer by student as right and wrong all option तो option रे नहीं all अछि कि option रे so it's what it's right and wrong हिसाब रे असेस करबा कि किछि wrong अछि कि ना ना wrong बोली दुनिया रे किछि नहीं so you are right you are wrong कहि के एमति असेस करबाटा भूल narratives real dialogues and process of experimentation are good देखो भूल करनी appropriate in EVS classes को टाइप रा लर्निंग टा appropriate learning by doing habo learning of descriptions learning of definition discourage of rote learning most important ତେଣୁ ଏଡି କରି परिबा
अरे डेफिनेशन लर्न करवाटा अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस डेफिनेशन घोषित दब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन ये सब बेले लिमिटेड एस्पेक्ट्स को कहला डिस्करेजिंग रोट लर्निंग कही एनकरेजिंग कहनी दृष्टि दबार भंगीर शैली रे परिवर्तन दरकार अछि तमर रोट लर्निंग अछि माने आंसर हबनी एटा नेगेटिव बोली जो भाबी देउछे एटी डिस्करेजिंग पर रेखाई छे you should have that patience to read the options properly and correctly otherwise you are going to miss the easy questions once easy questions are missed you are not going to qualify my friends this time is the time of highest competition objective of assessment of EVS learning is that EVS learning रो assessment काहे की करिवा लक्ष्य कौन EVS लर्निंग को असेस करिवार teacher gathers information about students achievement it is way of teaching rather than evaluation it provides feedback about students progress in mastering new knowledge it informs about students learning to provide support for the next step मते सब ठीक लागुच तमे कौन कहबो ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग रे असेसमेंट करिवार उद्देश्य कौन असेसमेंट काहे करिवा कोटा मोर अप्रोप्रिएट मनीष पात्र नहीं सेमती स्पेसिफिक मु दउनी तमे कहबो एसएसडी रो तो नहीं it is like it will help you for all competitive examination all teaching examination junior teacher SSD सेवक सेविका सबुथि पई कॉमन टाइप रो मिलिबो तुमको सी करबा सी बेस्ट provides feedback about students progress in mastering new knowledge following are the methods to teach EVS except methods to teach EVS except feedback रे सपोर्ट ता जाउची जाउनी कहीं राइट आंसर ए एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर्स केउंटी नुहे कहिछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोऑपरेटिव लर्निंग गाइडेड इंक्वायरी कोऑपरेटिव तो जानिछ कोन कोऑपरेशन जानिछ तो कोन हां आउ कहबा दरकार नहीं तो आउ कहबी नि सीधा आ करबो पटर पुरे देबी हां कोऑपरेटिव लर्निंग कथा टी कहिछ कोऑपरेशन रो एग्जांपल देछि कोऑपरेशन से जो गुपचुप वाला एग्जांपल टा नहीं हां कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बा वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल कोऑपरेटिव लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइडेड इंक्वायरी कोऑपरेटिव लर्निंग टा प्रोजेक्ट मेथड रे हुए जानि थाओ प्रोजेक्ट मेथड रे ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ 3-4 ଜଣ ମିଶିକି ବା 5 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଇଭିଏସ୍ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଟିଭ पूरा active yes one of the major objective of the teaching of EVS at the primary level is to enable students to one of the major objective of teaching EVS at primary level छुआ को कौन करवा कौन सक्षम करवा
एटा कोऑपरेटिव टा तमे पुणी कोलाबोरेशन सहित मिक्स करबनी प्रोजेक्ट मु कहिदेली प्रोजेक्ट टा कोऑपरेटिव हबनी कोन हबो हाँ असुविधा हो कौन हम कोलाबोरेटिव हम कोलाबोरेशन कोलाबोरेशन माने कौन तीन चार जन पांच जन मिसिकी गोटे काम करेंगे एटा हला कोलाबोरेशन कोऑपरेशन माने कौन ए ए रो टारगेट को अचीव करबा पई बी कौन कला ए को टिके हेल्प कर दो बा ए टिके बी को हेल्प कर देला बी रो टारगेट टा अचीव हे गला ये हला कोऑपरेशन एटी कोऑपरेटिव लर्निंग इज आल्सो गुड कोलाबोरेटिव इज फार मच बेटर देन कोऑपरेटिव लर्निंग अगेन इट इज कोलाबोरेशन गुपचुप एग्जांपल टा होची कोलाबोरेशन रो प्रोजेक्ट टा होची कोलाबोरेशन रो काहे कि एठी ए बी सी डी ई मिछि की पांच जन जाको कोन कले गोटे स्पेसिफिक टारगेट बा गोटे कॉमन गोल को अचीव कले तेणु कॉमन गोल रो कांसेप्ट जते बडा आसिला अरे प्रोजेक्ट जो दिया जाए गोटे प्रोजेक्ट ऊपर पांच जन जाको काम कले तो प्रोजेक्ट टा सबमिट करिवे एटा कॉमन टारगेट अछि प्रोजेक्ट ऊपर काम करिवे पांच जन जाको मिसिकी ये हला कोलाबोरेशन अच्छा one of the major objective of teaching EVS at primary level is to enable student yes संतोष reciprocal teaching हम कहबा एग्जांपल हे परिबो इंडिविजुअल एम हेले कोऑपरेशन कॉमन एम हेले कोलाबोरेशन विश्वजीत राइट एठी राइट आंसर होची सी जहा करिछ तुम माने हेल्प स्टूडेंट्स टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ आउटसाइड द स्कूल the basic objective of educational excursion in AVS is कहीं कि एजुकेशनल एक्सकर्शन करा जाए तार उद्देश्य कौन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स बट डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें कहि परिबो एक्सकर्शन रे गले कोन हबो से डायरेक्ट एक्सपीरियंस टा पाइबे वेरी गुड problem solving method to teach EVS at primary level should problem solving method to teach EVS at primary level should सबुठु इम्पोर्टेंट कोन इंडिपेंडेंटली काम करिबा पई कोन करिबा एनकरेज करिबा encourage children to work independently is most important and appropriate which of the following is most suitable to transact EVS in primary classrooms yes EVS transaction primary classroom रे सेति पई most suitable method कोटा inquiry based teaching ये जोड़ा जाक तो तुम जानिଛ चक एंड टॉक हो कि लेक्चर मेथड हो एटा कोन टीचर सेंट्रिक टा भलो कि टीचर सेंट्रिक टा टोटली भलो नो को केस रे ईवीएस रे बाकी रहला जग एंड मग अप्रोच एटा जेमति बैंकिंग सिस्टम कहितले बैंकिंग अप्रोच जेमति बैंक को गल्लो पैसा धरिक आसिलो सेमते स्कूल को गल्लो पाठ नै कि आसिलो बा जग रे बहुत कोन रखिचंती पानी रखिचंती किए टीचर ये होचन टीचर अब मग टा कोन एटा होच तमे हाँ एटा होच तमे जग रु मग को ढळा हला हाँ हे गला नॉलेज और नॉलेज एमती केतर हुए कि नॉलेज एमती करा जाए कि नहीं एटा तो फील कर देला से बैंकिंग मॉडल भलिया जग एंड मग अप्रोच टा दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच इट इज आल्सो टीचर सेंट्रिक हमें भाबु जे टीचर सबु जानिछि छुआ किछि जान नांती टीचर जहा दबो छुआ ताको धरि के घर को आसियो नहीं छुआ निजे निजे इंक्वायरी करिवो निजे डेवलप करिवो निजे एनालिसिस करिवो एक्सप्लोर करिवो which of the following is desirable practice for an EVS teacher गाइडेड इंक्वायरी माने गाइड जने थिवो से गाइड करूथो इंक्वायरी हबो कोन गाइडेड इंक्वायरी कोन जनकर गाइडेंस रे इंक्वायरी कले गाइडेड इंक्वायरी जने गाइड करियो थिवो
Which of the following is desirable practice for an EVS teacher? Desirable practice को type of practice EVS teacher करिवा उचित. Desirable practice EVS teacher कौन करिवा उचित? Addressing multicultural dimension of diverse classrooms, encouraging children to provide important information related to the concepts. Information टा सबले मने रखिता. Information टा सबले information दबाटा limited. एटा गोटे बड़ जिंस नुह. Not a good approach. Linear arrangement is not good. Relying on in textbook ଉପରେ only in textbook ଉପରେ rely କରିବା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ. ତେଣୁ addressing multicultural dimensions of diverse classroom ୟାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ? Multicultural diverse dimensions addressing ହିରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଟର୍ମ ଗୁଡା ଅଛି. ହଁ ବି ବାଲାଙ୍କ ପିଠରେ ଖାଲି ଖୋଳା ହବ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହବ ଖାଲି. ହଁ encouraging children to provide important information. ଏତେ information ନିଅନି ହେଲା. ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛ, information collect କରିବାକୁ ନୁହଁ. Community resource is considered an important teaching learning resource for EVS at primary level because community resource is considered an important teaching learning resource for EVS. କାହିଁକି community resource को ଆମେ important TLM बोली ବା teaching learning resource बोली भाविबा primary level रे. सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट होची एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल माने अरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन पाइबाटा किछि असुविधा भलो कथा. एक्सपीरियंस पर्सन रे किछि असुविधा नै. एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोन प्रथमे बुझो. एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहूछि कि निजे एक्सपीरियंस करियो छुआ. जानि छ सब जानि छ. मु गुटे अधिका गुटे जानला वाले सिना कहि दउछि. तम किंतु जानि छ ठीक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग लर्निंग मेथड इन EVS? Not a teaching learning method in EVS. ସବୁ ହେଇପାରିବ EVS ରେ. ହଁ ସାଇंटिफिक मेथड हबनी. एक्सपेरिमेंट एठी करिवार नै हम. हमें प्रोजेक्ट करि परिबा, फील्ड विजिट करिबा, ऑब्जर्वेशन करिबा, बट साइंटिफिक अप्रोच टा पूरा साइंस सहित कनेक्टेड हो. But EVS no doubt it is also connected to science, but scientific method is not so much effective in teaching teaching EVS. For authentic and meaningful learning of EVS through field trip, a teacher can use I will make it silent. Authentic and meaningful learning of EVS through field trip कहिछि. Structured worksheet, unstructured worksheet, formal instruction for the visitor, and कहिछि creating group of the students and their leader. कौन करिवारे structured worksheet चलिबो. काहेकि unstructured हेले असुविधा ହେଇଯିବ. ए गोटाको काटि दियो. मो कथा मान. ए गोटाको काटिकी ए करो. हबो कि? हबो. ହଁ କରିଛ ତ ଆଉ କଥା କଣ ଆଗରୁ ମାନ ଦେଇଛ ନା. କଣ ସବୁ କହିବି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ଠିକା ନେଇଛି ସବୁ କହିବି ବୋଲି. ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କହିଦେବି ତମେ କଣ କରିବ? ପେଡାଗୋଜି କାଇଁ ପଢୁଛ? ମାଷ୍ଟର କଣ କରିବା କଥା? ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡିଦବା କଥା. ନାଇଁ ତମେ क्वेश्चन ଟା ପାଇଲ. ଏ क्वेश्चन ଉପରେ ଆନାଲିସିस କରିବାର କଣ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମୁଁ ତମଠୁ ଅଧିକାରଟା ନେଇଯିବି ୟା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଡିଟେଲ ଗାଳି ପକେଇବି ଏଠି. କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ. ତମେ ତମର ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନ. Which one of the following should be minimized in the EVS classroom? Which of the following should be minimized in the EVS classroom? ସବୁଠୁ କମ କୋଉଟା କରିବା କଥା?
जोटा मु कहली एबे डिबेट करबा को मु रेडी अछि जुक्ति करबा को मु रेडी अछि जुक्ति इज अ बढ़िया थिंग पिक्चर रीडिंग इट इज अनदर वेरी गुड थिंग narratives also बढ़िया but descriptions ସବୁ ଜିନିଷରେ descriptions ଦରକାର ନାହିଁ do not don't need to describe everything minimize କରିବା description boring କରିଦିଏ ଜିନିଷ picture reading is very good thing ମୁଁ କହିଲି which of the following objective of teaching EVS shows the concern of education for sustainable development आराम से କରିପାରିବ ଦେଖ education for sustainable development to emphasize design and fabrication skill, to engage children in exploratory activity, develop technological and quantitative skill, to critically address the concern of equality, justice, peace, and respect for human dignity and right. Human rights କିଛି ଅଛି dignity କିଛି ଅଛି equality justice peace ର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେତେବେଳେ sustainable development ଆସିବ ସେତେବେଳେ rights କଥା ମାନେ ଆମ ପର ପିଢି ତାଙ୍କ ପର ପିଢି ବି ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ରାଇଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହେଲା ନା ସୁନା ଖଣି ଦି ତିନିଟା ବାହାରିଲା ତ ସବୁ ତକ ସୁନା ବିକିକି ଖାଇଦବା the aim of EVS education is to EVS education ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ एक्जाक्टली ये जो टिके पूर्व आम कहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा सेटा केमती हे परिबो जेतेबेले तांको भितर गोटे सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वैल्यू आमे आनिबा तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर ओन सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमर किछि हमर परिवेश प्रति किछि दायित्व रहिछि एवं तार किछि मूल्य रहिछि ए जिनसटा को बुझेबा को ईवीएस एजुकेशन पूरा प्राइमरी लेवल रो पढ़ा जाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ around us the world around us ठीक सेमती things we make and do yes very good बहुत बढ़िया things we make and do in EVS curriculum is a themes and sub themes of EVS curriculum एगुड़ा जानिबाकु पड़िबो सिलेबस टॉपिक एठी जेतेबेले हमें 6टा मेन थीम अछि केतरा अछि 6टा मेन थीम गोटे हला फैमिली एंड फ्रेंड्स एटा देखि दबो फैमिली एंड फ्रेंड्स गोटे अछि फूड वाटर शेल्टर हला तापरे ट्रैवल तापरे ए जोटा में देखिले थिंग्स वी मेक एंड डू थिंग्स वी मेक एंड डू तो एटा कोथरे जीवो थीम रे जीवो थीम ना सब थीम ओवर एटा थीम तो श्योर ओके गली the theme of EVS at primary level are connected and interrelated because of देखो 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 integrated integrated nature of EVS EVS सब पाठ सहित कनेक्टेड सोशल साइंस साइंस समस्त को बांधी की रखी जदि कि EVS
ସେଥିପାଇଁ ତ ଏନଭାରमेଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ନା ଏନଭାରमेଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଯିବି which of the following is sub theme of the syllabus of EVS sub theme କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଠି ଦେଖି ନଥିଲେ ସେଇଟା ସେଠି ଯୋଉଟା କହି ନଥିଲି ସେଇଟା ଏଠି ଅଛି ଧର ତାକୁ କ'ଣ ସବ୍ ଥିମ୍ ରେ ଯିବ relationships ଚଳିବ ଆରେ ଚଳିବ ନା ନାଇଁ ଚଳେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ହଁ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ନିଅ ନିଅ ତମ ରୁଚି ମସଲା ସમેଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଥିଲା କି ନା ଏଇଟା ନଥିଲା ବୋଧେ 20 ଯାଏଁ କରିଥିଲେ ବୋଧେ 40 ନୁହଁ 20 21 ଯିବ 21 ଏଇ ନିଅ ତମ ରୁଚି ମସଲା ଏଇଟା ସେଟା ଏଭରେଜ ଥିଲା ହଁ 20 ନମ୍ବର କର Functional aspect of language gained momentum with the dash of language learning ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା functional ମାନେ communicative এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ 2 ରେ 21 ହଁ to assess reading ability at primary level which one of the following is most appropriate most appropriate କୋଉଟା reading comprehension ABCD ଶିଖିବ ନା କ'ଣ ଏଠି ନାଇଁ ହବନି ଚଳିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ପୁଣି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ପରା ତା ପୂର୍ବକୁ ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏଇଠି ଆସିକି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ ମାଡ଼ ଗୋଟିଏ ତଳେ ପଡିବନି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କି the method that is based on the coordination of language and physical movement is କ'ଣଟା କରିବା ପ୍ରିପେୟାର କରିଦବା based on coordination of language and physical movement କାହିଁ ଆଉ କିଛି ହବନି କି ଆଉ କିଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟିପିଆର ଟୋଟାଲ ଫିଜିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ହବ ନାଚି ଡେଇଁ ଖେଳି ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଲେ ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ ଡଜ ନଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରାମାର ଦିଆଯିବ ଏନକରେଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ student communication skill enable students to use language fluently এটা ବି ହେଇପାରିବ communicative skill enhance students communicative skill ଟା grammar translation method ସହିତ connected ନ ହେଇପାରେ ହେଲା communicative skill ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଟା ନ ହେଇପାରେ ବାକି ସବୁ ହବ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଥ୍ରୋରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗ୍ରାମାର କ'ଣ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ନାହିଁ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ତ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ନା which among the following supports a pre-reading activity pre-reading activity को किए सपोर्ट करे
Which among the following supports a pre-reading activity? Before reading कौन करिवा? Preview करिवा. Before reading preview करि परिवा. आउ कौन या भितर कौन है परिवो? Prediction task. Pre-reading prediction task कौन? Before reading जोटा करा जाए predict करा जाए. Predict करा जाए कौन? कौन आमे पढ़िवा को जाउचे? कौन आमे पढ़िवा को जाउचे? Pre-reading. Which one of the following is not correct about portfolio assessment? Not correct about portfolio assessment. देखुथिबो देखि चाहिँ कि करूथिबो because ये मजाक नुह एग्जाम भी पाखे आसलानी एंड तमरो ये सब क्वेश्चंस सबु लैंग्वेज माने ओडिया लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ पई हेल्पफुल रहबो ता सहित कॉमन पेडागोजी सहित मध्य पर जेतो किछि किछि स्पेसिफिक आछी लाइक पोर्टफोलियो असेसमेंट रो क्वेश्चन टा आसला नॉट करेक्ट कोटा हो देखो एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग हे परिबो मोर ऑटोनोमस हे परिबो फोस्टर स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन sorry reflection and help them to self monitor their learning हे परिबो किंतु one time assessment एटा नुह एटा कोन जीवन रे थरे होय कि पोर्टफोलियो असेसमेंट टा one time ना not one time exactly पोर्टफोलियो माध्यम रे हमें निजर टैलेंट को शोकेस करूचे शोकेस आवर टैलेंट माने सब अचीवमेंट गुडा को रहे पोर्टफोलियो रे तमरो जोटा ये कोन सेटा कोन सीबीसीबी करिकुलम वाइटा बा बायोडाटा जोटा को कहउछ सेतरा तमे कोन देखाओ मोर 10th रे एमती थिला मोर एटा एते थिला मो ए मेडल पाइथिली मो सेठी से मेडल पाइथिली मेडल जदी पाइनो हो जाई छी हम तो एन्जॉय बहुत करछि लाइफ रे भाई तम मेडल भीतर लुचि रहिथिबा से लुह को मु फील करि दरकार नाही मत से मेडल कोइ स्क्राइबलिंग अच्छा स्क्राइबलिंग is an important step in learning to write because children are trying to scribbling रे कोन होय what is scribbling अब एथरे कोन होय scribbling होछि लिखिबा a single seat will not decide my future but multiple seats will decide 26 yes हे करूछ काहे कि produce letters and words right from the day they pick pen or pencil make meaning from the marks for them spend some time in reading writing and numeracy imitate adults अच्छा produce letters and words right from the day they pick pen or pencil जो दिन से पेंसिल पेन धरले सेई दिन ज्ञानर गंताघर खोलिला आउ सेमाने लेखि देई गले वेद उपन्यास साहित्य गल्प एवं कविता आ तमे पढ़ी पकइलो महाज्ञानी छुआ गुडा तो ताली पकइलो पूरा काले आसु आसु और या दल मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम जो मार्क टा से कला मन कर से एमती करी गारे दला यार किसी गोटे मीनिंग कलो हाँ मन कर से एमती कर दला एथिरे तमे करके नाड़ा लगे देला गोटे कहलो बेलून हाँ से आसी गारे देला एमती गोटे कर देला एथिरे गोटे तमे कोन आ गोटे चित्रटे करके ता बदल ना एटा कोन एटा अंडा अरे मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम तांको भाई मीनिंग करियो से जहा मार्क करियो ताको नै अदे गुडा से मा ज्ञानी गुडा सु माड़ अभाव घोर अभाव हो देखो जहाँ तो करिवो करिवो हो देखो if children hear two languages spoken around them this exposure to two languages will दीटा लैंग्वेज को एक्सपोज होचंती समान घरे ओडिया बाहर हिंदी
कौन करियो प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज नहीं वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक करछो ग्रामर टास्क्स आर कंटेक्चुअलाइज्ड कंटेक्चुअलाइज्ड हवा दरकार माने तम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हवा दरकार ग्रामर टास्क टा कंटेक्चुअलाइज माने इन द कंटेक्स्ट मु सेठी के जाईथिली दास बाबू को बेल मारिली दास बाबू आसिले मु कहिली झील को टिके देखा करिया टिके मैथ पढ़े दी था बुझी पार नथली दास बाबू सेठू मते गोटे गोईठा मारले मु छिटकी के आसिक आम घर अगणार पइली ये पूरा कंटेक्चुअल एटी कोठी केतेबेले पढ़िली केतेबेले गली केतेबेले देखा कली आसिली पास्ट टेंस रे सब जिंस ग्रामर टास्क कंटेक्चुअलिस्ट 29 which of the following was suggested by Noam Chomsky नोम चomsky तो जानिଛ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସିଲା ମାନେ ନୋମ ଚomsky ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଠ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୋଉ ପେଡାଗୋଜିରେ ରହେ ନ ରହେ କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେଡାଗୋଜିରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବି ସେ ପିଆଜ ବାଇଗୁଡ୍ସ କି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ପେଡାଗୋଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ବସିକି ଦେଖ କାହାର ଦମ ଅଛି ତ ନୋମ ଚomsky ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ ହଁ ହଁ ମହେଶ ଏଇଟା ତମ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ହଁ so right answer is there is an innate human ability to acquire language so ସେଇଟା ହଉଛି language acquisition device କି ହଁ फिक्स अच्छी रे बाबू एक्विजिशन ये लर्निंग नो एटा तो मदर लैंग्वेज एटा तो तू ऑटोमेटिक सीखी जीवु ये आशीर्वाद तथास्तु जन्म हेलु तो लैंग्वेज तो माँ जो लैंग्वेज कहउछन तो घरे जो लैंग्वेज सेटा ऑटोमेटिक सीखिबु बिना एफर्ट रे बिना कॉन्शियसनेस रे अनकॉन्शियसली विदाउट एफर्ट हे जीवो एक्वायर करिबु एक्विजिशन हबो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अछि ब्रेन रे तथास्तु कहि कि छडा जाइछु भगवान सेति कि देइछन्ती पावर A teacher is asking students to write letters of alphabet with the help of their fingers in the sand tray. କରିଥିଲେ The objective of the activity is to କରିଥିଲେ sand tray ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି teacher କଣ ପିଲାକୁ different alphabet ବା letters ସେ आराम से आसुଛି ଗାରେଇ ଦଉଛି A B କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ promote playful atmosphere in class नहीं strengthen their fine motor skill कहीं fine motor skill का सहित related small muscles सहित ମୁଁ କହିଥିଲି small muscles सहित small muscles कोठी अछि आज्ञा finger रे अछि तेणु finger रा small muscles आगो develop करिवो ना leg and hands रो large muscle बा gross motor skill आगो develop करिवो ना नहीं gross motor skill आगो develop करिवो तेणु gross motor कोटा swimming jumping running जोटी बड़ बड़ muscle यूज होला स्मॉल मसल बा फाइन मोटर स्किल तापरे ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल फिंगर्स रो राइटिंग रे पेंटिंग रे ड्राइंग रे ये सब जिनस यूज होला सो दैट्स इट फॉर टुडे धन्यवाद समस्तंकु बहुत सुंदर रेस्पॉन्स रहिला सेथि पई एंड एक्सप्लोरिंग गोल्स रे जदि अछ नुवा ताले सब्सक्राइब करबा सहित लाइक शेयर भी करि दियो एंड stay connected, stay tuned with Exploring Goals family. समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for this fantastic participation. Take care and keep learning, keep exploring, keep inspiring. Stay connected with Exploring Goals in all our social media handles. Telegram channel रे भी join करे जाओ वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे अवेलेबल अछि सब लिंक्स एंड Instagram, Facebook, Twitter, X हैंडल जाय को कोचे हम सबुतरे connect ହେଇକି ରହିପାରିବ and exploring goals application ରେ must connected ରହ to prepare yourself properly for upcoming examination. Take care. जय जगन्नाथ.